Good morning, everyone, and welcome to Morning Convo. First, we'll start with technical and derivatives outlook. If you see yesterday's trading session, in the initial first half, we see index of in the narrow range, but in the last half, we have seen a final selling in the index reaching 18,500, the key level that the base for it managed to hold that level. But on the expiry date, it failed to hold and it closed below 18,500 zones. Now, if you see index is now approaching in the daily time at 10 DM, that is near about 18,400 level. So I guess like 18,400 should be a good support for the index or can be an opportunity to add long on the breaching of 18,400. Then only our short-term outlook stance would change towards 18,200 or levels. Or on the flip side, if we maintain to hold about 18,400 levels, then we could see again moving towards 18,600 zones. So 18,700 zones would be an ideal hurdle for the index going forward. Now coming to the sectoral specific trend, yesterday real estate and pharma and IT stocks were showing strength while chemical, infra and metal stocks were seeing perform okay. So coming to the pharma Nifty pharma index is also looking strong on the charts, and we guess like if anybody wants to trade out, then pharma stocks should be kept on radar for in the likes of Sun Pharma, Divi's, and Sapna. They in the heavyweight should be kept on the radar. Now coming to the Bank Nifty, if we see Bank Nifty also yesterday broke below 44,000 level, and we could see a sharp cut in the Bank Nifty to the tune of 43,800 odd level. And if we see that 43,500 is a crucial zone for the Bank Nifty, and Bank Nifty if it reaches below 43,500, if it reaches below 43,500, if it reaches below 43,500, then we could see further selling in the Bank Nifty towards 43,000 odd levels, and then it odd levels. So now support for the Bank Nifty, if you see then 43,500 and 43,000, the crucial support on the lower side, and the higher than 45,000 would be acting as a hurdle for the index. Now coming to the derivatives front, on the derivatives Nifty futures has shown long inventory in a 4 odd percentage. PCR is also inching towards on the lower side to the 0.87 from 0.99. And if you similarly in the Bank Nifty, we had seen short built up to the tune of 3 odd percentage, and PCR is also moving towards lower side, that is 0.69 from 0.82. Now coming to the options front, heavy call ratings are visible at 18,500 and 18,600 zones. Yesterday we had seen major unwinding at 18. Day before yesterday 18,600, so 18,600 now acting as a hurdle for the index. And on the put side, if you see 18,300 and 18,500, so writers are slowly moving on the lower side to get the supports. And coming to the Bank Nifty front, 43,700 and 43,600 are the strikes for the put side, where we can see good writings in that level, so that should act as a support, and breach of that level will witness a strong unwinding in the put side. Similarly, in the call side, 43,800 and 44,000 will be acting as a hurdle for the index. Now coming to the FI sides, FI, if you see that if 2 days or 3 days back, FIs were majorly long in the position. Now we have seen the last 2 days they have majorly covered their long position, and they are short by 12,000 odd contracts. And they had net short yesterday by 22,000. So they have massively cut their position from 61% of long short ratio to 45 odd percent. So this should be an point to be noted, or should be alarmed. And on the cash side also, yesterday they have sold a tune of 71 odd crore, and DI has got a tune of 488 odd crores. And in the long builders, if you see Bajaj Auto, Apollo Hospital, IndusInd Banks have seen long built up yesterday, while shorts were built in Kotak Bank, UPL, and Coal India. Stocks that should be kept on radar are looking good are India Cements, CDSL, Kalyan Jewellers, KNR Constructions, Sun Pharma, and this stock should be kept on radar. That's it from mine. I'll hand over to Bhavesh for more updates. Hi. Good morning, team. So starting with IRCTC, so there has been change in CMD. Seema Kumar has been appointed as CMD of IRCTC with effect on 1st June. She's an officer of IRCTC of IR TS 1986 batch, and she's a gold medalist in MSc. Then on auto, so on auto, overall industry witnessed a mixed set of volume. Importantly, passenger vehicle numbers were better than street expected. M&M saw volume growth of 22%, and Hyundai and Maruti saw double-digit volume growth, and Tata Motors was disappointing with only 6% volume growth. But two-wheeler segments saw recovery given the ongoing wedding seasons, and Eicher Motor was a big surprise where they gave a 22% YOY growth. And CV segment remained mixed, where Volvo volumes were up by 12%, but again Tata Motors here again disappointed with 12% decline YOY, and Ashok Leyland was flat on a YOY basis.
And then there is a news on NCC. So NCC has received an order worth 2,100 crores, which takes its total order book to 5,000 crore plus. So overall, very positive for the company, and it has achieved 25% of its guidance in first 2 months itself. So, and we have a buy rating on the stock. And then on we released a report on metals monthly yesterday. So what the key highlight has been that in May 2023, Chinese steel prices have fallen by 14%. So post COVID opening up, post COVID reopening has not played out as expected. In fact, China has weakened, it seems, and that is reflected in steel price fall. So even in India, steel prices were lower by 5% on a month-on-month basis. And apart from that, even non-ferrous metals saw weakness. Basically, it is likely that US might go into recession in the next 2-3 quarters. So maybe market is kind of anticipating that, and hence there is not much positive movement on the metal side, and hence we continue to maintain our neutral stance. And lastly, on Indian Hotels, so Indian Hotels announced signing of a resort in Uttarakhand. So it will boost. It will boost their reach in Uttarakhand, and with this addition, Indian Hotels has 9 hotels across Taj, uh, S- Selections, Vivanta, and Ginger Brand up in Uttarakhand. So overall, this is very positive for the company. So that's it from me. Over to you, the retail team. Yeah, thank you, sir. So we'll start with the economic news. So Ministry of Finance on 1st June said that the revenue from GST crossed rupees 1.57 lakh crore in the month of May for the fifth time since the inception of GST. At rupees 1.57 lakh crore, the GST collected in May overall was lower than April's record of 1.87 lakh rupees. Sorry, it's 1.87 lakh crore rupees. However, the government has collected monthly GST revenues more than rupees 1.4 lakh crore for 14 months in a row now. Compared to May 2022, the latest GST collection figure is up by 12%. Secondly, industry body CII on Thursday said that India's economy is expected to grow in the range of 6.5 to 6.7% in the current financial year, which is supported by strong domestic drivers and robust capex momentum of the government. India's gross domestic product, that is GDP, grew by 6.1% in the March quarter, pushing the annual growth rate to 7.2%. The growth has propelled the country's economy to 3.3 trillion US dollars, setting the stage for achieving the 5 trillion USD target in the next few years. Coming to some company specific news, the first news is about Coal India, where the offer for sale issued by the country's largest coal mining company has been subscribed 3.457 times the base size. The offer size for non-retail investors is 8.31 crore shares, and for retail investors, it is 92.44 lakh shares. Now, the government has decided to exercise the green shoe option to the extent of up to 9.24 crore shares or 1.5% stake in addition to the base issue size of 9.24 crore shares. Accordingly, the total offer size will be 18.48 crore shares, of which 1.84 crore shares would be reserved for allocation to retail investors as a part of offer on June 2nd. The next news is about Aditya Birla Capital, where the financial services company said that the board has approved preferential issuance of rupees 1,250 crores to its promoter and the promoter group entity out of the total approved equity fundraising of up to rupees 3,000 crores. The preferential issuance will be undertaken at a price of rupees 165.1 per share. The company will issue shares worth rupees 1,000 crore to Grasim Industries, who is the promoter, and rupees 250 crore to Surya Kiran Investments, which is again a promoter group entity. The next news is about Paras Defense and Space Technologies, where the company has entered into a joint venture agreement with Israel-based Precision Technologies. Both will undertake the business of manufacturing, implementation, installation, integrated logistics support, after-sales support, training, etc. in the electro-optic infrared field in accordance with the Government of India's Make in India initiative.
Paras will hold a 30% stake in the joint venture, and the rest 70% is held by Controp. Coming to the next news, which is an update of TVS Motor Company. Uh, the company has overall registered a sales growth of 9% year on year, increasing from 3.03 lakh units in May 2022 to 3.3 lakh units in May 2023. Domestic sales grew by 32% year on year to 2.52 lakh units, but exports fell to 30.5% to 76,607 units. TVS iQube Electric recorded sales of 17,953 units in May 2023, increasing significantly from 2,637 units last year in the same month. The next update is on Maruti Suzuki, where the company announced production of 1.8 lakh vehicles in May 2023, increasing by 9.3% over 1.64 lakh units produced in the last year's May. Passenger vehicle production stood at 1.76 lakh units, which is up by 9.8% over the same month last year. The next update from the auto sector is on Eicher Motors, where the company announced a sale of 77,461 units of Royal Enfield in May 2023, increasing by 22% over 63,643 units sold in the same month last year, which was driven by domestic business. Exports, however, fell by 34% year on year to 6,666 units in May 2023. Coming to the next update, which is on Tata Motors, where the Tata Group company sold 74,973 units of commercial and passenger vehicles in May 2023, falling by 1.6% from 76,210 units in May 22. Domestic sales dropped by 2% year on year, but the exports grew by 4.8% in the same period. The next news is about NHPC, where the state-owned hydropower development organization has entered into a memorandum of understanding with Vidyut Utpadan Company, which is from Nepal, for joint development of the Fukot Karnali HE project. This is a run-of-the-river hydropower project in the Kalikot district of Karnali province in Nepal. The next update is on Emphasis, where the mid-cap information technology company on Thursday announced a dedicated business unit for generative artificial intelligence. The new division, known as Emphasis AI, will offer guidance on the integration and generative AI solutions, create proprietary generative AI technologies, provide license to more than 250 AI models through its hyperscaler solutions platform, and collaborate with 50 startups to assist clients in solution development. Emphasis AI will also supply clients with conversational AI tools such as chatbots to employ in their business. Coming to the next update, which is on the Adani Group, where Adani Road Transport, a wholly owned subsidiary of Adani Enterprises, on Thursday said that it has decided to terminate the pact to purchase Macquarie Asia Infrastructure Fund's toll road portfolio in Andhra Pradesh and Gujarat for rupees 3,110 crores. On August 4, 2022, that is last year, the company had said that it has entered into a definitive agreement to acquire Gujarat Road and Infrastructure Company, which was owned 56.8% by Macquarie Asia Infrastructure Fund, and Swarna Tollway Private Limited, which was owned 100% by Macquarie Asia Infrastructure Fund. Next update is on AstraZeneca, where the company received approval from the Central Drug Standard Control Organization for its cancer drug tremelimumab concentrate. The approval paves the way for the launch of the same solution of 20 mg, according to the management. The next update is on HCL Tech, where the IT major inked an agreement with IIT Kharagpur for collaboration in the field of petroleum engineering and earth sciences. Both will jointly develop innovative and sustainable solutions to address critical challenges of the petroleum industry. The next update is on NTPC, where the company partnered with Ohmium International to manufacture proton exchange membrane electrolysis in order to produce green hydrogen in India. Ohmium's advanced green hydrogen technology will be used to decarbonize energy, transport, and ammonia projects.
The next update is on SJVN, where the company signed a project development agreement for 669 megawatt lower Arun hydroelectric project in Nepal. The project shall be constructed in 5 years at a cost of rupees 5,792 crores with a levi's tariff of rupees 4.99 per unit, according to the company. The final update is on Lupin, where the pharma major's wholly owned subsidiary Novel Laboratories has received approval from the United States Food and Drug Administration, that is USFDA, for abbreviated new drug application for diazepam rectal gel. So this was all from my side. Now handing it over to Brijesh sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी एक कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आईआरसीटीसी के न्यूज से। आईआरसीटीसी में नए सीएमडी का अपॉइंट किया है सीमा कुमार, जो कि 1 जून 2023 से होगा। वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस की ऑफिसर रह चुकी है, 1986 की बैच की है और गोल्ड मेडलिस्ट है एमएससी में। तो ये एक न्यूज अपडेट है। इसके पहले भी इसके अलावा एक कमलेश मिश्रा करके उनको भी अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड मार्केटिंग आईआरसीटीसी के लिए। तो ये एक न्यूज वॉच करने के लिए रहेगा। कल ऑटो के नंबर्स आए थे, ऑटो के नंबर्स पॉजिटिव थे। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे। ओवरऑल एक्सपोर्ट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। पीवी सेगमेंट में थोड़ा बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स देखने को मिले थे। एमएनएम के जो नंबर्स थे वो उसमें ग्रो हुए 22% ईयर ऑन ईयर, जिनमें हुंडई और मारुति के भी डबल डिजिट के नंबर्स देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स में थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है, 6% लोअर थी। और एमओएनएम के जो बट एमओएनएम के जो पीवी के जो सेल्स है वो ऊपर थे 15% के करीब। टू व्हीलर सेगमेंट में भी रिकवरी देखने को मिले थे। अभी जो वेडिंग सीजन वगैरह चलते हैं उसके चलते हुए बजाज और आशा मोटर्स में काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। आशा के वॉल्यूम्स 22% अप थे, जबकि टीवीएस के भी वॉल्यूम ग्रोथ में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हीरो मोटो के जो नंबर्स थे वो सिंगल डिजिट में आए हैं देखने को। सीवी सेगमेंट में मिक्स व्यू रहा है। वॉल्वो के जो नंबर्स थे वो 12% अप थे, जबकि टाटा मोटर्स के जो सीवी के नंबर्स थे वो 12% ईयर ऑन ईयर लोअर थे। अशोक लेलैंड के नंबर्स फ्लैट आए थे। और महिंद्रा के जो सीवी के नंबर्स है वो डी ग्रोथ देखे थे 10%। ट्रैक्टर सेगमेंट्स में थोड़ी सी नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिली है, ज्यादातर इतना उछाल नहीं था। एमएनएम के जो ग्रोथ थे वो 5% नीचे देखा गया, जबकि एस्कॉर्ट्स के जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में देखने को मिला है रूरल मार्केट्स में। एनसीसी के ऊपर एक अपडेट है, उनको ऑर्डर बुक मिला है 2100 करोड़ के मई 23 में, और जो पूरे साल के जो ऑर्डर इनको है 5000 करोड़ की प्लस देखा गया, बताया गया था। तो एक पॉजिटिव है। फुल ईयर के जो गाइडेंस है उसके 25% के जो उनका ऑलरेडी पहले 2 महीने में उनके ऑर्डर बुक्स मिल चुके हैं। हमारा पाई रेटिंग है एनसीसी के ऊपर 154 के टारगेट पे से, जो कि अपसाइड है यहाँ से 25% के करीब। मेटल सेक्टर पे एक अपडेट है, जहाँ पे चाइना के रीओपनिंग के बाद हमें लग रहा था कि एक सेक्टर में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है हुआ है इस सेक्टर में। चाइना में इंडिया और चाइना के जो स्टील प्राइसेस थे, तो इंडिया में 5% और चाइना के 14% मंथ ऑन मंथ में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर भी इंडियन और चाइनीज स्टील प्राइसेस में 19 और 35% के डी ग्रोथ ही देखने को मिला है। अप्रैल महीने में देखा है कि बहुत इंडियन और चाइनीज स्टील प्रोडक्शन में फॉल हुआ है, और जो कि 11 टन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और 93 मिलियन टन चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन है वो। और हमें लगता है कि ग्लोबली भी ये स्टील सेक्टर में इतना ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल सकता है, और हो सकता है आने वाले दिनों में शायद यूएस में तो 2-3 क्वार्टर के बाद स्लाइटली रिसेशन के आसार आ सकते हैं, जो कि एक कंसर्न रहेगा ओवरऑल मेटल सेक्टर्स के लिए। तो हम न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे मेटल्स के ऊपर। अगला अपडेट है इंडियन होटल्स के ऊपर। एक पॉजिटिव न्यूज है, उन्होंने नया रिसोर्ट साइन किया है उत्तराखंड में। इससे उत्तराखंड में उनके जो होटल्स की जो सिलेक्शन है वो अभी बड़े हैं। उनके लगभग 9 होटल्स है, जहाँ पे ताज सिलेक्शन, विवंता, जिंजर ब्रांड के ये है, और 4 उनके अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो नॉर्मली इससे उनके जो वहाँ पे जो
पॉपुलैरिटी है और जो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बढ़ेगा। वो ये ज्योग्राफिकल रीजन में अभी उनके पास उत्तराखंड में 88 रूम्स के जो रूम्स हैं, और आगे जाके भी वो नौकी चाल लेक करके जो एक एरिया है वहाँ पे भी उनके आने के वहाँ पे भी उनके एक नए प्रोजेक्ट के आसार है। तो ओवरऑल ये नेट नेट पॉजिटिव व्यू है इंडियन होटल के लिए। हमारा इसमें बाय रेटिंग है। इसके बाद कुछ न्यूज मिनिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं कि रेवेन्यू जो जीएसटी से आया था वो 1.57 लाख करोड़ मार्क क्रॉस कर चुका है, जो कि कंटिन्यूस फिफ्थ 5वीं बार है कि ये ये लेवल जीएसटी ने मेंटेन करके चला है। सो जो भी और जो हमने डेटा जो देखा है, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट किया वो 1.4 लाख के करीब 1.4 लाख करोड़ के करीब है, जो कि कंटिन्यूस 14 मंथ के पॉजिटिव ये नंबर्स आए हुए हैं। पारस डिफेंस के ऊपर एक अपडेट है। द कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया इजराइल बेस्ड कॉन्ट्रोप्रो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी से। ये दोनों ही अभी मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट्स और सेल्स और ट्रेनिंग में ध्यान देंगे। पारस डिफेंस का इसमें 30% का होल्डिंग रहेगा, जबकि ये जो इजराइल बेस्ड कंपनी है उनका स्टेक 70% के करीब रहेगा। टीवीएस मोटर्स के जो नंबर्स आए थे, 2 और 3 व्हीलर्स के जो सेल्स ग्रोथ 9% ईयर एन ईयर में देखा गया था। इंक्रीजिंग जो बढ़ोतरी है 3.3 लाख यूनिट मई 2022 से में देखा गया था, जबकि 3.3 लाख यूनिट्स में 2023 में देखा गया था। डोमेस्टिक सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, 32% के करीब। ईयर ऑन ईयर 2.5 लाख यूनिट्स का सेल्स देखने को मिला है। टीवीएस आई क्यूब इलेक्ट्रिक उसके जिस सेल्स में 17,953 यूनिट्स के सेल्स देखा गया मई 2023 में। तो ये काफी अच्छा अपडेट है। टीवीएस ओवरऑल टेक्निकली भी हमें काफी अच्छा लगता है, वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा। मारुति के नंबर्स आए थे। मारुति ने प्रोडक्शन 1.8 लाख व्हीकल्स में 2023 में बताया गया उनका हुआ है, जो कि इंक्रीज है 9.3%। पैसेंजर व्हीकल में उनका जो प्रोडक्शन है 1.76 लाख यूनिट्स में देखा गया है, जो कि 9.8% है, जो कि हैज कंपेयर करते हैं हम लास्ट ईयर के हिसाब से। एनएचपीसी के ऊपर एक अपडेट है। द कंपनी ने बताया कि वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद्युत उत्पादन कंपनी से के साथ टाइप किया है, जो कि नेपाल बेस है। वहाँ पे ये रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो एक अपडेट होगा एनएचपीसी के ऊपर। टाटा मोटर्स के नंबर्स थे। टाटा कंपनी ने बताया कि वो 74,973 यूनिट्स बेचे हैं कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल मई 2023, जो कि सेल्स में गिरावट है 1.6% के करीब। तो और डोमेस्टिक सेल्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, करीब करीब 2% के करीब। अगर ये डेटा अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो टाटा मोटर्स के नेट नेट में थोड़े से फिगर्स में सेल्स के फिगर्स में गिरावट देखने को मिली है। फिर एक अपडेट है एचएल टेक टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया आईआईटी खड़गपुर के साथ। ये कोलेबोरेशन होगा ग्रीन ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंस प्रोडक्ट के ऊपर। ये दोनों ही सॉल्यूशन है सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए होगा। तो प्राइमरीली ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री को रिलेटेड अपडेट होगा, तो ये जो कि एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है एचएल टेक के लिए। लुपिन के ऊपर एक अपडेट है। कंपनी ने बताया कि उनके जो नोवल लेबोरेटरीज है उनको एक अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए से, वो एक नए ड्रग के एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। लास्टली एनटीपीसी के ऊपर एक अपडेट है। कंपनी ने एक पार्टनरशिप साइन किया है ओईएम इंटरनेशनल कंपनी से, जो एक मैन्युफैक्चर करेंगी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के चलते हुए रहेगा, जो एक लगभग थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज हो सकता है एनटीपीसी के लिए। तो नेट नेट बायस पॉजिटिव है। इंडेक्स पे भी हम सपोर्ट की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि 18,400 के लेवल पे कहीं ना कहीं निफ्टी में सपोर्ट देखता हुआ मिलेगा।
रेंज में है मार्केट 18,400 से 18,600। जब भी ये रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हमें लगता है कि एक 19,200 के करीब मार्केट जाता हुआ जाने का आशा काफी ज्यादा है। तो हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे और लोअर लेवल पे डिक्लाइन रहेगा। अगर हम ये व्यू चेंज करते हैं तो हम रियल टाइम में अपडेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। हैव ए नाइस डे।